तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास है ये सुपर बिल्डर ट्रक, जिसका कि ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है, काफ़ी अच्छा बॉक्स है। ये हमारे पास मॉडल नंबर 179A है। इसके लिए हमें 3AA बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं आती है। तो चलिए इसे अनबॉक्स एंड टेस्ट करते हैं। इसके साइड में कुछ इसके फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि 3AA बैटरी, लाइट स्टॉप एंड 27 मेगाहर्ट्ज का रिमोट। ये इसके बॉक्स के पीछे की तरफ का व्यू एंड ये है हमारा ट्रक। तो चलिए इसे अनबॉक्स एंड टेस्ट कर रहे हैं। ये है हमारा मेन ट्रक, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी बड़ा है इस साइज़ में। एंड बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है गाइस। ये ऐसे स्लाइड करने से ये एंड ये भी ओपनेबल है मेरे हिसाब से। चलिए इस ट्रक को निकालते हैं। और ये तीनों निकल गए हैं। एंड चलिए इस बॉक्स को रखते हैं साइड में। और ये है हमारा मेन ट्रक, जो कि मैं कहूँगा इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी है। और ये पीछे से भी ऐसे ओपनेबल है। वाओ, ऑसम। यहाँ से स्लाइड करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। ये भी इसका फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी तरह से रिसर्च एंड डेवलप किया गया है। ये शायद ओपनेबल है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे खुलता है। चलिए इसे रहने देते हैं और रिमोट निकालते हैं इसका। ये है इसका 27 मेगाहर्ट्ज का रिमोट, स्टीयरिंग रिमोट। इसका भी मैं कहूँगा इन हैंड फील काफ़ी अच्छा है गाइस। और ये इसके साथ में आती है कुछ बैटरीज।
है बैटरीज के लिए चार्जिंग एडाप्टर, और ये है हमारी 700 mAh की बैटरीज, 1.2 वोल्ट 700 mAh की बैटरीज। चार्ज करने के लिए आप सिंपली यहाँ इसे प्लग इन कर सकते हैं। ये है इसका ऑन एंड ऑफ स्विच। तो चलिए स्क्रूज को ओपन कर रहे हैं, बैटरीज इंसर्ट कर रहे हैं। तीनों की तीनों रिचार्जेबल बैटरीज है, जैसे कि आप यहाँ डायरेक्टली ये चार्जर ट्रक के साथ प्लग करके चार्ज कर सकते हैं। ट्रक को मैंने ऑन तो कर दिया है, लेकिन अभी तक कुछ लाइटिंग या कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए रिमोट में भी बैटरी डालते हैं, टेस्ट करते हैं इस सुपर बिल्डर ट्रक को। ट्रक की जो बैटरीज है उनमें चार्जिंग नहीं है। तो चलिए हम हमारी बैटरीज इंसर्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये ट्रक चालू हो गई है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी सही तरीके से काम कर रहा है।
गाइस ये सिर्फ इस बटन से लेफ्ट या राइट होती है और इस बटन से फॉरवर्ड या बैकवर्ड होती है। हम स्टीयर नहीं कर सकते, स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं है ये। और इसके लिए जो बैटरीज है वो भी हाई पावर बैटरीज की ज़रूरत होगी हमें। हमारी बैटरीज हमने टेस्ट करके देख ली। ये ट्रक मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है बिल्ड क्वालिटी के मामले में, लेकिन जो है ये इतना अच्छा आउटकम नहीं दे पा रही है स्पीड के मामले में। जब हम इसे ज़मीन के ऊपर रखते हैं तो लाइटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से होती है, लेकिन जब हम नीचे इसे रख के ड्राइव करते हैं तो लाइटिंग प्रॉपर नहीं होती और स्पीड भी काफ़ी कम हो जाती है, जो कि एक इसका कौन है डिसएडवांटेज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फ्यूचर में ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।